वेलकम बैक एवरीवन। मिस सोनिया, आई एम श्योर आई एम ऑडिबल और आप भी अपना माइक ओपन कर सकते हैं। ओके, सो मिस सोनिया, वी वर टॉकिंग अबाउट योर इंटरव्यू और हम उसमें अभी एक्टिविटीज को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे, या वो पॉइंट्स के जिन्हें हम नहीं करेंगे। सो कोड स्विचिंग इज द फर्स्ट थिंग जो कि आप नहीं करोगे। आप कोशिश करेंगे कि कोड स्विचिंग से गुरेज करें, कुछ बेसिक नॉलेज अपना जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको एजुकेशन मिनिस्टर का पता होना चाहिए, जो कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, जब तक आपके मिनिस्टर मुराद राज रहे हैं, क्योंकि वो ट्वीट ज्यादा करते होते थे तो वो आपको याद हैं, लेकिन इनका आपको नहीं पता। एलसीडी के मतलब कुछ मजीद चीजें हैं जिनमें आपकी डिटेल्स जो हैं आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर कि आप जो हैं इनको एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। द लास्ट थिंग इज अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कि जब आप जो हैं वो किसी भी सिचुएशन के अंदर खुद को फंसता हुआ महसूस कर रहे होते हो, आपने उसको कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। आपने जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोडी के ऑप्शन को यूज करके वहां से आप कोशिश करेंगे कि आप जो है वो वहां से निकलेंगे, ठीक है। मिस सोनिया, आई एम श्योर कि आप सुन पा रहे हैं मुझे, ठीक है। आप जो है इसमें यू विल नॉट गो फॉर अ कवर। आप अपना माइक ओपन कर लीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं साथ साथ मिस सोनिया। गुड, ठीक है। मिस सोनिया जरा आप टाइम एंड अगेन अपना माइक खुद से बंद कर देते हैं। आई एम अनम्यूटिंग यू फॉर द थर्ड टाइम। आप जो है अपना माइक ओपन कर लीजिए। अगर आप म्यूट करेंगे तो डेफिनेटली फिर हम आपको अनम्यूट नहीं करेंगे, कि शायद आप बंद रखना चाह रहे हैं माइक को। सर am I audible? यस, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। सो आप जो है इन चीजों को देखने की कोशिश कीजिएगा, और इसके अलावा जो है हम कुछ पॉजिटिविटीज की बात कर लेते हैं। मिस सोनिया, ओवरऑल आपका इंटरव्यू जो है बिगनिंग में बेहतर नहीं था, लेकिन आपने जो है योर नॉलेज अबाउट लिटरेचर स्पेशली स्पीकिंग, आपके जो है नॉलेज इन ऑप्शन वाला पोर्शन अगर हम बात कर लें, दैट वाज वंडरफुल। आपको कुछ चीजों पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और उनमें आपका पोइट्री का वो सेक्शन है कि जिसमें आपको डेफिनेटली यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई द वेरी बेसिक थिंग्स फ्रॉम द रेन, जो कि सबसे पहली पोएम है और आप बच्चों को पढ़ाते आए हैं। और उसमें से आपको पता है कि यू हैव अ लॉट रेफरेंसेस देयर, जिसमें आपके पास जो है मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एग्जाम्पल है, ऑक्सीमोरन है, ठीक है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई सक्सेसफुली नहीं कर पाए, इनको इन पर खास वर्कआउट करने की जरूरत है। आप जो है लाइंस जो है द रेन की नहीं पढ़ पाए थे, आपको मेमोराइज करने की जरूरत है। कुछ बेसिक सी लाइनें जो हैं, लवलीस्ट ऑफ द ट्री इज अ चेरी नो में से आपने जो है वो कुछ पढ़ा, बट वो भी सिर्फ आगाज की 1-2 लाइनें थी। द गुड थिंग अबाउट इंटरव्यू इज द जेन ऑस्टन और इसकी जो बुक्स हैं और उसके ऊपर जो नॉलेज है, दैट इज द वंडरफुल थिंग। दैट वाज द पोर्शन के जिसने आपको काफी आपके इंटरव्यू को सपोर्ट। सो क्वेश्चन ना होता तो शायद जो है वो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है सोनिया आपके लिए, ठीक है। सॉरी सर, आपकी आवाज काइंडली सर यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर दे, मुझे समझ लग जाए। वो आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, कटिंग आवाज कट हो रही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जेन ऑस्टन पे आपकी ग्रिप अच्छी है, और लेकिन कोशिश भी कीजिएगा कि जेन ऑस्टन के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा राइटर, एक और जो है इसी एज में से जो है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। यू मे गो फॉर पोइट्री। अगर जेन ऑस्टन के साथ साथ जो राइटर्स दिख रहे थे उनके मुतालिक भी आपको अपना नॉलेज जो है वो होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जिसपे ऊपर आपको काम करने की जरूरत है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। सर आपने ये 2 नेम मेंशन किए हैं राइटर्स के, वो मुझे समझ नहीं आए। कौन से प्रिपेयर करने को आपने कहा है? मैंने जॉनरास मेंशन किए हैं, राइटर्स तो मैंने नहीं मेंशन किए मिस सोनिया साहिबा। पहले मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो हैं मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है मिस सोनिया? सर आप ठीक आ रही है, पहले कट रही थी। बाकी पार्टिसिपेंट्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है? distortion है, so that we may improve. Is there any distortion in my voice? बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, their request है। अच्छा चलो कुछ सेकंड्स दीजिएगा, इस डिस्टॉर्शन को रिमूव करते हैं पहले।
there is no distortion और अब जो है हम बिल्कुल ठीक हैं। ओके अब जो है वो बिल्कुल ठीक आवाज है। सो मिस सोनिया हम बात कर रहे थे कि आप कोई सा एक पोएट पकड़िएगा इस स्टेज से और कोई सा ड्रामेटिक भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। The rest of the thing is that your performance based on this performance and just because of Jane Austen's and your answers about that age, you fall there on 60 marks. And that is not a good score कि जिससे हम जो हैं वो success की तरफ proceed further कर सकें. So you need to improve yourself in all the genres that we have mentioned. Okay? Okay, sir. So thank you so much, Miss सोनिया। आयशा खान जो हैं हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं। मिस सोनिया से आई एम श्योर कि जैसे आपने इनके इंटरव्यू सुना होगा, आपने चीजें एक्सप्लोर करने की भी कोशिश सबने की होंगी। सो बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, सो हम बगैर तमहीद बांधे जो हैं वो प्रोसीड फर्दर करते हैं सेकेंड इंटरव्यू की तरफ। मिस आयशा इज देयर। मिस आयशा, वेलकम टू मॉक इंटरव्यू सेशंस। हाउ आर यू? Thank you, sir. So by the grace of Almighty, I'm very good, but feeling hesitant in telephonic conversation. No worries, there is no need to worry about. It's a kind of booster that is going to boost your confidence, and I'm sure that Yes. Insha Allah, it is going to help you Yes, in the sir. long run. So should we proceed further with the formal interview? Yes, sir, sure, sir. Okay, Miss Aisha, if I'm not wrong, you hail from Bahawalnagar. Yes, sir. Okay, so what are the 5 famous and notable personalities of Bahawalnagar? Sir, Shaukat Lalika, who is provincial minister of Usher and Zakat, and Alamdad Lalika, who is the son of federal minister Abdustar Lalika, and then comes Mr. Malak Qasim, and then so in our area there is no very famous personalities, but from other areas there is we can say Mr. Fida Hussain, who is now elected as MPA and catching the attentions of others. Fair enough. So my question is about Bahawalnagar's literacy rate. It is just 25%. Yes. Why too much illiteracy is there? Though we have a campus of Islamia University there. Yes, okay, sir, we have. Sub-campus of, so, but still the literacy rate is just 25%. So what do you feel? Because you are a teacher, you are already serving the school education department. So this question is directly related to you as it falls in your own jurisdiction. Why 25%? What are the factors? Can you just pinpoint exactly 3 factors directly involved behind this illiteracy? Yes, sir. So basically, as it is on border and it is surrounded with one side on from India and then Cholistan, so there is backwardness and there is no we can say the poor people live here, and so lack of we can say wealth is also cause of this, because people are poor and prefer work than to study. And then I think what is the other name of Cholistan? You have mentioned Cholistan Desert, but what is the other name of Cholistan? Sir, it's Rohi. It's Rohi. Cholistan. That's very good. Yes, sir. So Cholistan is Rohi, and by the way, do you feel it is the largest desert of Pakistan? Sir, actually it is scattered in India and in Sindh with third desert. If we include third desert in this, then it is the largest, otherwise it is not. Okay, all right. So you are from Bahawalnagar, so I'm sure that you speak Saraiki. Sir, in Bahawalnagar we speak Punjabi. In Bahawalpur Saraiki is spoken. I am from Fortabas, from Bahawalnagar, so but I can understand Saraiki. Okay, all right. So you're specifically from Fortabas, the town. Yes, sir. Yes, sir. A subdivision of district Bahawalnagar. What was the previous name of Fortabas? Sir, its name was Phulda. Then in 1927, it was changed to Fortabas on the name of Nawab Sadiq Khan Abbasi's elder son, Nawab Abbas Khan Abbasi. Okay. So Harunabad and Fakir Wali, they are the famous towns, if I'm not wrong, that are quite close to Fortabas. Yes, sir.
Fortabas, by the way, is an important city of Pakistan because of some heritage. Do you Yes, know what sort of heritage sites are there in Fortabas? sir, as its name suggests, there are forts in Fortabas. Fort Mirgarh, Fort Jamgarh, Fort Phulra, Fort Mojgarh, Fort Marot. So these are the heritage. Okay, all right. And now, Coming back. so now, Yeah, please. Jamgarh Fort is very famous due to Cholastan Jeep Rally. So it is catching the attention of the people nowadays. Okay, well, Miss Aisha, talking Yes, sir. about the literature and talking about the literacy rate of your area, what is Yes, the sir. situation of girls' education in your area? How Sir, girls are coping obviously, with the education? They are sir, getting their exactly. education? Sir, even in my area, it is very low rate, and I am the first of my family and even of my town, means my, you can say, muhalla. So, who has done masters in English literature. So there were no concepts before that, and I am the, you can say, record breaker here. So you are a rule breaker there in Bhavalnagar. So you Yes, have mentioned you completed your masters in literature. yes, sir. What is the difference between literature and linguistics? I'm talking Sir, about the difference. I'm not asking about the comparison. Okay, it's difference. So what is the difference between literature and linguistics? Sir, literature presents the things, the life of the people, how they live, their culture, their economic, social, political, psychological situations and circumstances, while linguistics deals with their languages and how they speak and how they perceive a particular language, about their, we can say, a dialect, idiolect, etc. Okay, you have used two specific linguistics oriented words, dialect and idiolect. What is the difference Yes. between dialect and idiolect? Sir, when we talk about one person's way of talking, his way of intonation and stress of words, then it is called idiolect. And when we take a group or a particular area of having some similarities in speaking, similarities in stress on the words, then it is called dialect. All right, you have used the word stress. So do you know Yes. how we can find out stress in iambic pentameter? Yes, sir. In iambic pentameter, first syllable is unstressed and the second is stressed as defined. Is there any word. example? Yeah. So Okay. All defined. right. Okay. So how many total pentameters are there? Yes, sir. How many total pentameters are there? How many total pentameters are there? How many total meters are there? Let's make it easy for you. How many total meters are there? Sir, there are so many meters. For example, there is iambic pentameter, and then we can say tetrameter, then we can say heptameter, What do you mean by hexameter. iamb? What do you mean by iamb? Sir, it is, we can say, when there are two syllables and first is unstressed and the second is stressed. So how many iamb are there in cat? Iamb? How Sir, many iamb are there in cat? so only one. Okay, fair enough. What is the name of your favorite writer? But before that, what are your hobbies, Miss Aisha? What do you do in your leisure time? Sir, my hobby is book reading, though I'm not finding much time for this, but still I manage time to study. A very interesting hobby, book reading. So I'm sure that it will be a worthy experience to know the names of the books that you are reading nowadays. Sir, nowadays I've started Mayor of the Castle Bridge. Okay, so Thomas Hardy, if Yes, I'm sir. not wrong. Yes, So sir. what is the famous quotation from the Mayor of the Castle Bridge that has inspired you? Sir,
I am very impressed by Hardy's other novels. I have read Return of the Native and Tess as well. But this novel, actually, I read about its quotation that happiness is but an occasional episode in the general drama of pain. This haunts me a Very lot. good. Happiness is happiness. Yes. What is Yes. the exact quotation? You have missed something. So I'm giving you another chance once again. Happiness is but an occasional episode, general drama of pain. Happiness was but the occasional episode in a general Oh. drama of pain. Okay, sir. Okay. So from Thomas Hardy. So because you're interested in Thomas Hardy, we are going to talk about Thomas Hardy first. Thomas Hardy Yes. was not only a novelist, he was a poet as well. Do you Yes, second sir. the statement? Is it true? Yes, sir. Even he started his career as poet, but then on the advice of his friend, who is also a novelist, Meredith, he moved towards novel. But he wrote very famous novels. But after Tess and Jude the Obscure, he received a lot of criticism due to obscenity in the novels. So he left this and again moved towards poetry. So, in Thomas Hardy's work, is there any work that is related to word wars, like World War One, World War Two? Is there any poem, any piece of literature available on the word wars? Sir, I have read a poem of his that is Breaking the Nation. I think That's very this is the interesting title. poem, Breaking the Nation. So, So can here you he recite actually some? condemns. Yes, sir. So you can recite some lines from Breaking the Nation. Sir, basically, I'm interested in novel the most. And I have read I just want to know about his ideas about the poetry. So that's why I read this. Because Okay, I favor I'm novel. just Yes. I'm just reading a few lines from this poem. Only a man hoarding clouds in a slow, silent walk with an old horse that tumbles and nods, half asleep as they stalk. My question Yes. is that how you're going to relate these lines with any of the novel of Thomas Hardy of your choice? Sir, if we talk about a man person going in Hardy's novel, commonly starts as a man person going in sometimes alone, as in Return of the Native. When novel starts, a person was going alone and he was Eustacia Wilde's grandfather. So we can relate it with this, and then Yeah, that's true. That's true. Return of the Native, when it was published, Miss Aisha? so it was published in 1878. Yeah, that's true. And it was first publication, fifth publication, ninth publication, or sixth publication. Sir, basically, it was not allowed by the publishers. They refused to publish it, but it was then published serial wise. And then after that, in complete book, you can say it was published in 1870. So in how many serials was it published? How many total installments were there? Sorry, sir. Might be 6. Okay. No, these are the 12s, by the way. Okay, so talking about the return of the native, what is the significance of the title, the return of the native? Is it about Climb's You Bride's return? Yes, sir, it is about climbs. Actually, the heath is that place where the setting of the novel is placed. And from the very start, we have learned that climb is coming. So it means Climb was a native of that place and he has gone to Paris for business. So he was coming back and every person was talking about him. So from the very first chapter, we have listened that some native person is coming and that is Climb Your Bride. And after that, when he came, and he not only came, he brought a lot of disaster for the people, and especially for Eustacia, for Wilde, and even for his mother, and even for his own self. Okay, so how do you feel? How like whenever we talk about Eustacia, what sort of woman she is? Don't you feel Thomas Hardy is exaggerating the fate
in terms of the novels, whenever we read the novels of Thomas Hardy, he's giving special attention to the fate. What is the role of the fate in Thomas Hardy's novels? Yes, sir. Hardy presents fate as a character, not as a character for because it involves in the plot of character and in the on the lives of character. And if you talk about this particular novel, yes, Eustatia's personality is mysterious, but there is a role of fate, not only a role of fate on just Eustatia's personality, but even on Mrs. Jobright, because she was killed by the by an adder. That was the role of fate, and there was misunderstanding between Eustacia and Mrs. Jobright. Still, that was the role of fate, because role of fate is not is presented in many ways. It can be presented as character. Ms. Aisha, quickly speaking, what is alliteration? So alliteration, when we can say words have first letter alike. For example, when I count the clock, it tells the time. So ka sound in count the clock, it tells the time. What do you mean by foreshadowing? Foreshadowing means when actually a writer deliberately presents some scenes or events which actually can say predicts the what is going on in novel, and reader before reading that at the end he can perceive what is going on. What do you mean by onomatopoeia? So onomatopoeia, when different sounds are presented in words, in spellings. For example, buzz, and then we can say so these kinds of words. Okay, make a sentence of this idiom: an axe to grind. So to pass PPSC is an axe to grind for me. Okay, the last question, and then we are going to end up this conversation. How do you going to use this idiom, storm in a teacup? Yes, sir. Storm in a teacup. Storm in a teacup. What is the meaning of this idiom? Storm in a teacup. I have not seen, but I can guess it means something we can say a disaster at a short level and which takes place in a short place of time, I think. Okay, so yes, a sort of, but you need to give it a revision. The acid test. Yes. The acid test. Yes. What is the acid test? What do you mean by that? It's an idiom. So, to judge someone's personality. Yes, basically when you are going to know what's the value of a person, how effective he or she is. Thank you so much, Ms. Aisha. That was a wonderful interview from this. हमें पहले negativities पे बात करनी है, positivities पे बात Yes, sure, sir. किस पे बात करें हम सबसे पहले? अच्छी बातों पे या Obviously, negativities पे, ताकि end अच्छा हो. हाँ जी, अच्छा विलियम शेक्सपियर पता है, एक जो है वो all's well, उसमें जो है वो लिखा हुआ है कि हाँ जी, that ends well. अच्छा जी, it was a fantastic interview. I'm sure that all the participants जो सुन रहे थे उन्होंने भी observe किया होगा. Your preparation is very good, माशाल्लाह. कुछ चीजों पे जरा improve कीजिएगा. That is, your confidence level was there and we were not under any pressure. को कि आपने शुरू में बताया pressure के नीचे हैं, but ऐसा नहीं, हमें लगा कि आप हैं. तो ओवरऑल अच्छा था, बट थोड़ा सा जरा देख लीजिएगा अपने स्पोकन को कि इस पे अगर थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके. ये स्पोकन भी रिलायबल है, बहुत बेहतर है. और लेकिन अगर हम मेकिंग ट्रायल्स एंड आई एक्चुअली मेक struggles even in the front of mirror. So I'm hoping that I will cover it up. Yeah, okay, all right. So one thing that I've observed is जब आप बोल रहे होते हैं ना कहीं पे ना कुछ कभी grammatical थोड़े से loop holes जो हैं वो मिस हो जाते हैं. वो कि इतना क्लोजली कम्युनिकेशन में ऑब्जर्व किया नहीं जाता, लेकिन ऑब्जर्वेशन में अगर आ जाए तो फिर थोड़ा सा बुरा महसूस किया जाता है. इसको देख लीजिएगा. ओवरऑल द इंटरव्यू वाज not only good, it was a fantastic one. So if I am there, so I will rate this interview somewhere between
76 to 78. Oh my Okay. God, thank you so much, sir. So there's something that I'm going to rate it, और इसके लिए लेकिन अगर ये 80 plus पे भी जा सकता है, और उसमें अगर हम जो है वो if we are just going to work on a pronunciation, Yes. you know, इसलिए नहीं कि because हम अभी बात कर रहे हैं, इसलिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, मुमकिन है बहुत अच्छे स्पीकर भी हम, बट जब मैं बात कर रहा होता हूँ, मैंने या आपने फील किया होगा कि देयर इज अ बिग डिफरेंस एज कंपेयर टू द अदर पीपल हु आर स्पीकिंग इंग्लिश। थोड़ा सा एक्सेंट का जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। Yes. आपने किसी को कॉपी नहीं करना, बट नेटिव्स को सुनना जरूर है। यू आर जस्ट सपोज्ड टू लिसन द नेटिव्स एज मच एज यू कैन, and you may watch the Yes, sir. pictorial versions of the movies and all the things they are going to help you, ठीक है जी। Yes, sir. सर अगर कोई एक अच्छी चीज है तो वो भी बता दें। अच्छी चीजें हमने सारी इंटरव्यू को 78 तक ले गए हैं, रेट अच्छा किया, ये सब अच्छी चीजें ही थी। आपका नॉलेज अच्छा था, चोलिस्तान के बारे में अच्छा था, हमने जो भी क्वेश्चंस किए, आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस ड्रॉप किए हैं, और हमने अप्रोक्सीमेटली जो है वो मेरा ख्याल है 50 के करीब क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। सो इसमें कॉन्फिडेंस, जिन जिन पैरामीटर्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, सबसे पहले आपका स्पोकन होता है, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस होता है, तीसरे नंबर पर नॉलेज होता है, चौथे नंबर पे आपकी ग्रिप ऑफ योर फेवरेट जॉनरा होता है, 5वें नंबर पे जब हम रोटेट करते हैं एस्पिरेंट्स को इन चीजों के दरमियान के उनको जो फेवरेट जॉनरा वो बता रहे हैं, जो वो फेवरेट राइटर कह रहे हैं, उन्होंने पढ़ा भी है या जस्ट उन्होंने क्रैम किया हुआ है। सो यू वर वेल अवेयर ऑफ थॉमस हार्डी, यू वर वेल अवेयर ऑफ हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स आर देयर, और 2 के करीब क्वेश्चंस आपके सब ड्रॉप हुए। सो इट वाज अ फैंटास्टिक इंटरव्यू, बट स्टिल you need to improve your mistakes in your spoken। जब आप बोलते हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, और जो है दूसरे नंबर पे जब आप बात कर रहे होते हैं इनकी इडियम्स की, इनको ज़रा रिवीजन जो है वो दे दीजिएगा। ओवरऑल योर ग्रिप ऑन लिटरेरी डिवाइसेस वाज गुड एंड एक्सीलेंट एंड दैट वाज फैंटास्टिक वन। ठीक है सर। अच्छा जी, जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, और अब जो है मेरी 7:30 पे कोड क्लास होती है, सो आई हैव टू गो। मिस्टर आई एम सॉरी सर, आपके कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए थे, मैं जस्ट क्लास से फारिग हुआ था रात की, तो मैंने सोचा था टू आंसर यू, बट हमें एक मीटिंग में जाना पड़ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलोजाइज फॉर दैट कि आपको मैं आंसर नहीं कर पाया, बट आई विल डेफिनेटली लुक इन दोज क्वेश्चंस। Return of the Native was published in 12 installments were there, Sabat, 12 installments were there, ठीक है, 12 installments है। अच्छा, एक काम कीजिएगा, अब आपको सबको पता होगा कि आप में से ना बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके फेवरेट जॉनरास जो हैं वो सेम है, ठीक है। जैसे जेन ऑस्टन मिस सोनिया का था, मिस सोनिया की बड़ी अच्छी उसके ऊपर ग्रुप है, मिस आयशा का थॉमस हार्डी है। अपने ग्रुप में डिस्कशन करके जब नेक्स्ट हमारे जो इंटरव्यूज होंगे जिसमें आप जो है वो पेयर्स में काम करेंगे, जिनके फेवरेट जॉनरास एक जैसे हैं, वो हमें इंटरव्यू देने से पहले, इस इंटरव्यू में आने से पहले एक दफा उनके लिए कंपल्शन होगी कि वो दोनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे के क्वेश्चंस और उस फेवरेट जॉनरा का जो उनका फेवरेट है उनको एक्सप्लोर कर सकें। इसमें हम आपके ऑफिशियल ग्रुप के अंदर भी बता देंगे कि ये 2 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो काम करेंगे कलेक्टिवली, और एक पर्सन है थॉमस हार्डी, उसके 2 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को दोनों मिलकर फाइंड आउट करेंगे। पोइट है, एक नॉवलिस्ट, एक ड्रामाटिस्ट उस एज में से होगा, और वो सारे के सारे मिलकर उसके ऊपर जो है वो आप काम करेंगे। 2 लोग जो है वो एक फेवरेट जॉनरा को ले सकेंगे और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी होती है जिसके ऊपर डेफिनेटली हम काम करेंगे। बाकी जो डिटेल्स हैं, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द डिटेल्स इन योर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। क्वेश्चंस भी जो 18 सेंस चाहिए वो वहीं पे शेयर कर दिए जाएंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। सो देन टेक केयर, बाय बाय।